हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं क्लास 11 का सेकंड चैप्टर दैट इज सिस्टेमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमें देखना अभी क्लासिफिकेशन के बारे में हमें जानना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। थोड़ा ब्रीफ क्लासिफिकेशन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेंगे, ठीक है। सो कैरोलस लीनियस स्टार्टेड क्लासिफिकेशन। Carl Linnaeus or Carolus Linnaeus started classification. Carolus Linnaeus divided living organisms into two large kingdoms, that is kingdom Vegetabilia and kingdom Animalia. So Carolus Linnaeus or Carl Linnaeus started classification, history of classification, ठीक है। So he divided living organisms into two kingdoms, that is kingdom Vegetabilia and kingdom Animalia. After Carl Linnaeus, Haeckel in 1866 divided all living organisms into three kingdoms, that is Protista, plants and animals. After Carolus Linnaeus, Haeckel divided living organisms into three kingdoms, that is Protista, plants and animals. So after Haeckel, Chatham divided living organisms into two groups. After Haeckel, Chatham divided living organisms into two groups, that is prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes and eukaryotes. These groups, Chatham ने ये दो ग्रुप बनाया on the basis of cell they have. हमने कल देखा था कि सेल्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इन दिस वीडियो विल आल्सो डिस्कस वन मोर टाइम विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है ना। सो चैटन डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू टू ग्रुप्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। उसके बाद कौन है? कोपलैंड इन 1938 divided living organism into four kingdom, that is kingdom Monera जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, kingdom Protista, plants and animals. And after Copeland, Robert Harding Whittaker in 1969 divided living organisms into five kingdom, that is kingdom Monera, Protista, fungi, प्लांटी एंड एनिमलिया, ठीक है। तो आज हम पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द टाइप्स ऑफ सेल इन दिस वीडियो, देन विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ठीक है। एक जनरल क्लासिफिकेशन हम करेंगे और उस क्लासिफिकेशन में जो व्हाइटेकर की जो 5 किंगडम है वो एकोमोडेट करेंगे या एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो कैसे किया जाता है उसका एक ब्रीफ आइडिया हम यहाँ पे आज लेंगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द टाइप्स ऑफ सेल। ये था ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। So who started classification? Carolus Linnaeus. He divided living organisms into two kingdoms, Vegetabilia, Animalia. Then Haeckel divided living organisms into three kingdoms, Protista, plants and animals. After Haeckel, Chatham divided living organisms into two groups, that is prokaryotes and eukaryotes. The living organisms which having simple prokaryote cell belongs to prokaryotes, and the living organisms which having well-defined eukaryotic cell belongs to eukaryotes. After Chatham, Copeland divided living organisms into four kingdoms, Monera, Protista, plants and animals. And after Copeland, R.H. Whittaker divided living organisms into 5 kingdoms, Monera, Protista, fungi, plantae and Animalia. So first of all we'll see the types of cell, ठीक है। एंड आफ्टर दैट विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम दिखाएंगे 5 किंगडम किसकी? रॉबर्ट व्हाइटेकर की। सो एज आई सेड अर्लियर, कल हमने देखा था कि सेल्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल एंड वेल डिफाइंड eukaryotic cell, well developed eukaryotic cell.
There are two types of cell: simple prokaryotic cell and well-developed eukaryotic cell. Now today we will differentiate between this prokaryotic cell and eukaryotic cell. Today we will differentiate between prokaryotic cell and eukaryotic cell. So what is prokaryotic cell? Cell having simple nucleus is called prokaryotic cell, and cell having well-defined nucleus is called eukaryotic cell. Cell having simple nucleus is called prokaryotic cell, and cell having well-defined nucleus is called as eukaryotic cell. Now types of cell. You know that there are two types of cell: prokaryotic cell, and second type of cell is eukaryotic cell. So कल हमने देखा था pro means first and karyon means nucleus. Pro means first or simple or primitive. What is the meaning of pro? Pro means simple or primitive. And the word karyotic is coming from karyon. Karyon means nucleus. Understood? So what is prokaryotic cell? The cell which having simple karyon or simple nucleus is called as prokaryotic cell. While what is meant by U means advance. U means advance. And again karyon means nucleus. So what is eukaryotic cell? The cell having advanced or well-defined nucleus is called as eukaryotic cell. But this is not a complete definition of eukaryotic cell. देखो जैसे हमारी बॉडी बनी है ऑर्गन से, जैसे हमारी बॉडी फॉर एग्जांपल आवर ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स. जैसे हमारी बॉडी अलग अलग ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से बनी है, उसी तरह से सेल्स किससे बना है? Just like that, cell is made up of various cell organelles. ठीक है ना? जैसे हमारी बॉडी अलग अलग तरह के ऑर्गन्स से बनी है, उसी तरह से सेल बना है सेल ऑर्गेनेल्स से. ठीक है? Just like that, our cell is made up of various cell organelles. जैसे ह्यूमन बॉडी बनी है अलग अलग ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से, उसी तरह से सेल्स बना है किससे? सेल बना है अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स से. सेल इज मेड अप ऑफ different types of cell organelles. So cell is made up of cell organelles. Cell having cell organelles. Cell having cell organelles like nucleus, mitochondria, chloroplast. अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, vacuoles. Understood? So cell is made up of cell organelle. Cell is made up of various types of cell organelles. Now what is eukaryotic cell? यूकैरियोटिक सेल क्या है? पहले तो हमने बता दिया था कि ऐसा सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, दैट इज यूकैरियोटिक सेल. बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल. यहाँ पे हम एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल का डायग्राम निकालेंगे. देखो सेल किससे बना है? सेल इज मेड अप ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेल. सेल इज मेड अप ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स एक्सेट्रा. ठीक है? यहाँ पे मैं एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल का डायग्राम निकालता हूँ. आई ड्रॉ हियर द डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक प्लांट सेल. So suppose this is eukaryotic plant cell. This is eukaryotic plant cell.
सो चूंकि ये प्लांट सेल है तो इसकी आउटर कवरिंग, विच इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल? सेल वॉल. Cell wall is the outermost covering of plant cell. Inside the cell wall having cell membrane or plasma membrane. The second covering of plant cell is cell membrane. Cell membrane or plasma membrane. Cell membrane or plasma membrane. Cell membrane or plasma membrane is the second covering of plant cell. और इसके अंदर क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म, ठीक है. साइटोप्लाज्म में क्या रहेंगे? अलग अलग सेल ऑर्गेनिल्स. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस कैसे रहेगा? न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में खुद की अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी. यूकैरियोटिक न्यूक्लियस हैव इट्स ओन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यूकैरियोटिक न्यूक्लियस हैव इट्स ओन डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यूकैरियोटिक न्यूक्लियस हैव nuclear membrane. ठीक है. Nuclear membrane shows pores called as nucleopores. Nuclear membrane shows pores called as nucleopore. Nuclear membrane shows pores called as nucleopores. न्यूक्लियस के अंदर रहेगा अपना खुद का एक मैट्रिक्स या फ्लूइड, that is nucleoplasm. Nucleoplasm. And inside this nucleoplasm having DNA or chromosomes. Nucleus basically किस लिए रहता है? For the accommodation of DNA or chromosomes. So these are chromosomes. ठीक है. Chromosomes or DNA. So this is a well developed nucleus या well defined nucleus. Well defined nucleus में क्या क्या है? Well defined nucleus having its nuclear membrane, double layer nuclear membrane. Well defined nucleus having its own nucleoplasm. अंदर एक फ्लूइड रहेगा न्यूक्लियस के अंदर खुद का, न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर रहेंगे क्रोमोसोम्स या डीएनए. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शोज न्यूक्लियोपोर्स. और भी कई चीज़ें रहती है इसमें, जैसे कि इसमें न्यूक्लियोलस भी रहता है. न्यूक्लियोलस, ठीक है. सो आरएनए भी रहते हैं इसके अंदर. सो दिस इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. ठीक है. अब देखो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसलिए ये यूकैरियोटिक सेल है. अब यहाँ पे इस सेल में जो अलग अलग सेल ऑर्गेनल रहेंगे, जैसे प्लांट सेल है तो यहाँ पे वैक्यूल रहेगा. वैक्यूल, दिस इज वैक्यूल. दिस वैक्यूल हैज इट्स ओन मेम्ब्रेन. हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा फॉर द लिबरेशन ऑफ एनर्जी. स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है ना. सो ये माइटोकॉन्ड्रिया है. दिस इज माइटोकॉन्ड्रियन, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया. दिस माइटोकॉन्ड्रियन आल्सो हैज इट्स ओन मेम्ब्रेन. इस यूकैरियोटिक सेल में हर एक सेल ऑर्गेनेल को अपनी खुद की मेम्ब्रेन रहेगी. क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट रहेगा. क्लोरोप्लास्ट also having its own membrane. So इसमें न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन बाउंड है ही, वेल डिफाइंड है ही. न्यूक्लियस के साथ में बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड है. ठीक है ना. सो सेल के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. हमको यहाँ सिर्फ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या फ़र्क है, उनकी डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन हमको जानना है. ठीक है. तो यूकैरियोटिक सेल ये ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस से लेके सभी सेल ऑर्गेनेल्स कैसे हैं? मेम्ब्रेन बाउंड. न्यूक्लियस से लेके सभी सेल ऑर्गेनेल्स इसमें क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड. सो द सेल विच हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस and membrane bound cell organelles is called as eukaryotic cell. What is eukaryotic cell? The cell having well defined nucleus and membrane bound cell organelles is called eukaryotic cell. What is eukaryotic cell?
What is eukaryotic cell? What is eukaryotic cell? The cell having membrane, the cell having well defined nucleus and membrane bound cell organelles is called eukaryotic cell. ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस को तो खुद की मेम्ब्रेन रहेगी ही, साथ में सभी सेल ऑर्गेनेल्स को अपनी खुद की मेम्ब्रेन रहेगी, उस सेल को हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल. So what is eukaryotic cell? The cell having well defined nucleus and membrane bound cell organelles is called as eukaryotic cell. ऐसा सेल जिसमें well defined nucleus रहेगा और सभी सेल ऑर्गेनेल्स कैसे रहेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड. That cell is called eukaryotic cell. Now what is prokaryotic cell? प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं रहेगा. जनरली न्यूक्लियस को हम सेल का कैप्टन कह सकते हैं. यहाँ पे तो न्यूक्लियस ही मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स की तो बात ही छोड़ दो. ठीक है ना. सपोज दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है. तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस रहेगा इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डीएनए. So this circular DNA, which is called as nucleoid, this is the nucleus of this cell. और ये न्यूक्लियस डायरेक्ट रहेगा साइटोप्लाज्म में. There is no nuclear membrane, there is no nucleoplasm, there is no nucleopore. So here in prokaryotic cell, न्यूक्लियस के नाम पे एक सर्कुलर डीएनए रहेगा. दिस सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. और ये सर्कुलर डीएनए डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में मौजूद है. दिस सर्कुलर डीएनए डायरेक्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियोपोर नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, सिर्फ एक सर्कुलर डीएनए है. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल. अब न्यूक्लियस का ये हाल है तो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स तो छोड़ ही दो. इस सेल में एक भी सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहेगा. सो हाउ विल यू डिफाइन प्रोकैरियोटिक सेल? द सेल which having simple nucleus and without membrane bound cell organelles is called prokaryotic cell. The cell which having simple nucleus and without membrane bound cell organelles is called prokaryotic cell. So यहाँ पे हमने prokaryotic cell और eukaryotic cell को differentiate कर लिया है. So what is the exact definition of prokaryotic cell? The cell which having simple nucleus and without membrane bound cell organelle is called as prokaryotic cell, while the cell having well defined nucleus and with membrane bound cell organelle is called eukaryotic cell.
So Chatham in 1925 divided living organisms on the basis of cell. So cell is the basic feature of all living organisms. That's why क्लासिफिकेशन की शुरुआत अगर हमको करना है तो हम कहाँ से करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल. ठीक है. So Chatham divided living organisms into two groups. And this classification, Chatham did this classification on the basis of cell. Okay. So on the basis of cell, there are two types of living organisms. Living organisms are divided into two groups. That is prokaryotes and eukaryotes. देखो चार्टर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेल की बेसिस पे डिवाइड किया है 1925 में. जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद रहते हैं उनका ग्रुप बनाया उसने प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक. और जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेल डिफाइंड सेल रहता है, वेल डेवलप्ड सेल रहता है, उनका ग्रुप बनाया उसने यूकैरियोट्स और यूकैरियोटिक. सो living organisms may be prokaryotic or prokaryotes and they may be eukaryotic or eukaryotes. We belong to this group, that is eukaryotes. So prokaryotes. Now prokaryotes and eukaryotes are the two groups divided by Chatham. Now eukaryotes, which having eukaryotic cell, well defined cell, well developed cell. Eukaryotes may be unicellular and eukaryotes may be multicellular. Eukaryotes are further divided into unicellular eukaryotes and multicellular eukaryotes. ठीक है. All those eukaryotes which having only one cell is unicellular eukaryotes, while the eukaryotes which having more than one cell are multicellular eukaryotes. So ये क्लासिफिकेशन चार्ट आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है. You have to remember this classification chart forever. Understood? ये बहुत important है. ठीक है. So first of all, Chatham divided living organisms into prokaryotes and eukaryotes. Eukaryotes may be unicellular or multicellular. ठीक है. Now हम यहाँ पे वाइटेकर की 5 किंगडम एडजस्ट करेंगे इस क्लासिफिकेशन में. Will adjust here or accommodate here the 5 kingdom of Whitaker, which is the first kingdom of Whitaker, Monera. Understood? So all prokaryotes belongs to kingdom Monera. सभी प्रोकैरियोट्स व्हाइटेकर के कौन सी किंगडम में आते हैं? ऑल प्रोकैरियोट्स बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा. और इनमें कौन आते हैं? किंगडम मोनेरा इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. सभी तरह के बैक्टीरिया किस किंगडम में आते हैं? मोनेरा. देखो सभी प्रोकैरियोट्स मोनेरा में आते हैं और मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं सभी तरह के. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सभी बैक्टीरिया में कौन सा सेल मौजूद है? प्रोकैरियोटिक सेल. ऑल बैक्टीरिया, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल. ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल. So the first kingdom of Whitaker is Monera and all prokaryotes belongs to kingdom Monera. Monera includes all types of bacteria. It means that all the bacteria having simple prokaryotic cell. ठीक है. Now
all unicellular eukaryotes belongs to kingdom Protista. All unicellular eukaryotes belongs to kingdom Protista. सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट जिसमें हम अमीबा को ले सकते हैं, अमीबा, प्रोटोजोन्स, ठीक है, प्रोटोजोन है, अमीबा, डायटम्स, अंडरस्टूड. सो ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा. सो प्रोटिस्टा में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे? ऐसे जिनमें यूकैरियोटिक सेल है, वेल डेवलप्ड सेल है, लेकिन एक ही सेल है. All those eukaryotes which having only one cell belongs to kingdom Protista. अच्छा, प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटिस्ट जो है, कुछ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, कुछ फंगाई लाइक प्रोटिस्ट पाए जाते हैं, तो कुछ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट पाए जाते हैं. प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटिस्ट प्लांट लाइक है, सम प्रोटिस्ट आर प्लांट लाइक. फॉर एग्जाम्पल डायटम, ये यूनिसेलुलर अलगी है. डायटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. सम प्रोटिस्ट आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में हम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमीबा इज एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. सम प्रोटिस्ट आर फंगाई लाइक प्रोटिस्ट. इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं मोल्ड. एंड और एक ग्रुप है प्रोटिस्टा में, उनको कहते हैं यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिनॉइड्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है. यूग्लिनॉइड्स आर द ऑर्गेनिजम्स which show autotropic nature in presence of light. यूग्लिनाइड shows autotropic nature in presence of light. जब उनको लाइट मिलता है तब वे प्लांट की तरह फूड बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस. But they don't get light. They are totally heterotropic in nature like a animal. यूग्लिनॉइड्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, जब उनको लाइट मिलता है तब वे प्लांट की तरह बिहेव करेंगे. दे बिहेव लाइक अ प्लांट, means they produce food through photosynthesis in presence of light as they have chlorophyll. But when they don't get light, they totally behave like a heterotrophs. That is, they behave like animals. They can't prepare their food in absence of light. इसका एग्जाम्पल लेंगे हम यूग्लिना. इन सब के बारे में हमको डिटेल में आगे देखना है, ठीक है. सो ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा. ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है. Now eukaryotes, multicellular eukaryotes divided into, there are some multicellular eukaryotes in which their cell having cell wall, ठीक है ना. some multicellular eukaryotes having cell wall in their cell, but some multicellular eukaryotes do not having cell wall in their cell wall absent. So all those multicellular eukaryotes in which their cell having cell walls divided into two kingdom, that is kingdom fungi and kingdom fungi and plantae. So all those multicellular eukaryotes in which their cell having cell wall but they lack chlorophyll, that is, they lack chlorophyll, means they are heterotropic. So all multicellular eukaryotes, their cell having cell wall but they lack chlorophyll, that is, they are heterotropic. All heterotropic multicellular eukaryotes in which cell having cell wall belongs to kingdom fungi.
belongs to kingdom fungi, while all multicellular eukaryotes in which their cell having cell wall and they having chlorophyll means they are autotrophic belongs to kingdom plantae. इसमें कौन आएंगे? सभी ग्रीन प्लांट्स, all green plants belongs to kingdom plantae, and all funguses belongs to kingdom fungi. फंगल सेल में सेल वॉल तो होता है, बट दे डोंट हैव क्लोरोफिल. अगर फंगल सेल में क्लोरोफिल होता तो उनका भी कलर जो है ग्रीन कलर होता उनका, और वो अपना खाना खुद बना सकते थे, मतलब वो भी ऑटोट्रॉपिक होते. बट फंगल सेल में सेल वॉल तो है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है, मीन्स दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, मीन्स दे आर टोटली हेटेरोट्रॉपिक. व्हाइल प्लांट सेल हैविंग सेल वॉल एज वेल एज क्लोरोफिल. दैट्स व्हाई ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट फ्यू प्लांट्स, near about all plants are autotrophic in nature because they have chlorophyll. कुछ गिने चुने एग्जाम्पल छोड़ के सभी ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. जैसे कि कुछ पैरासिटिक प्लांट्स है, जैसे कि कस्कुटा नाम का एक प्लांट है, वो ऑटोट्रोपिक नेचर का नहीं है, वो पैरासिटिक नेचर का है. ऐसे एक दो प्लांट छोड़ दिए जाए तो बाकी सभी ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक नेचर के हैं, मीन्स दे प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. ठीक है. सो यूकैरियोट्स, मल्टीसेलर यूकैरियोट्स हैविंग सेल वॉल, ऐसे मल्टीसेलर यूकैरियोट जिनके सेल में सेल वॉल मौजूद है उनको दो किंगडम में डिवाइड किया गया है. ठीक है ना. All multicellular eukaryotes in which cell having cell wall but they lack chlorophyll. Chlorophyll absent है जिनमें, तो उनका किंगडम रहेगा fungi. As fungi lack chlorophyll, they appear white. अगर क्लोरोफिल होता तो उनका कलर भी ग्रीन होता और वो ऑटोट्रॉपिक होते. ठीक है. But they don't have chlorophyll. They belongs to kingdom fungi and they are heterotrophic. ठीक है. All multicellular eukaryotes in which cell wall is present and cell having chlorophyll means they are autotrophic in nature belongs to kingdom plantae. And all eukaryotes, multicellular eukaryotes in which cell do not have cell wall and they are heterotrophic belongs to the fifth kingdom of Viticulture, that is Animalia. So how will you define animals? Animals are multicellular eukaryotic heterotrophic organisms. Animals are multicellular eukaryotic heterotrophic organisms है, उनके सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं है, and they are heterotrophic. Animals are heterotrophic in nature. So all multicellular eukaryotic heterotrophic organisms belongs to kingdom Animalia. इनके सेल में सेल वॉल नहीं रहेगी, हमारा यही ग्रुप है. ठीक है. All multicellular eukaryotic organisms in which cell having cell wall but they lack chlorophyll belongs to kingdom fungi. And all those multicellular eukaryotic organisms in which cell having cell wall but they also having chlorophyll belongs to kingdom plantae. So we will accommodate here the five kingdom of Viticulture. Viticulture divided living organisms into five kingdom, that is kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, Plantae and Animalia. So once again I will repeat this classification. ठीक है. देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चैटन ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. अब आपको मीनिंग पता है. प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल रहेगा और यूकैरियोट्स मतलब ऐसे जिनमें यूकैरियोटिक सेल रहेगा.
हमने प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल ये क्या है, ये भी देखा है. What is eukaryotic cell? The cell having well-defined nucleus and membrane-bound cell organelle is called as eukaryotic cell. While the cell do not having well-defined nucleus and lack membrane-bound cell organelles is called prokaryotic cell. जिस सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहेगा या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं रहेंगे, उस सेल को क्या कहेंगे हम, प्रोकैरियोटिक सेल. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में भी प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स. All prokaryotes belongs to kingdom Monera. इसमें सभी तरह के बैक्टीरिया आते हैं. ये क्लासिफिकेशन चार्ट हमको बताता है कि सभी बैक्टीरिया में कौन से सेल मौजूद है, प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, हम आगे वन बाय वन ये सभी किंगडम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो ऑल बैक्टीरिया बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा. सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में कौन आएंगे, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा. ठीक है, यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स which having cell wall but lack chlorophyll belongs to kingdom fungi. As they lack chlorophyll, they are heterotrophic in nature, means they can't prepare their food and they are white in color. All multicellular eukaryotes in which cell having cell wall and chlorophyll also belongs to kingdom plantae. As they have chlorophyll, they are autotrophic in nature and they can prepare their own food material. They belongs to kingdom plantae. All multicellular eukaryotes in which cell wall is absent in their cell, means they are heterotrophic, belongs to kingdom Animalia. Belongs to kingdom Animalia. सो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसमें जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आज हमने यहाँ पे ले लिया है. ठीक है, अगले वीडियो में अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. गुड बाय.